panel 7. And the theme of that panel is Resilient Ecosystem, Community and Beyond Hospitals. The moderator for that session is Lieutenant General Dr. S.D. Behera, Ati Vishishta Seva Medal, a veteran of the Indian Army, former MD, Kalinga Hospital, BBSR, and former Director General, Org and Personnel at the Office of the DGFMS. Lieutenant General Dr. Sanjay Darshan Behera, a veteran of the Indian Army, hailing from Odisha, started his military career in 1984 after completing MBBS from VSS Medical College, Burla in Odisha. He has a diploma in US Army Medical Department in Texas, MHA from AIMS, New Delhi, and MPhil from the National Defense College. In his 37-year-long illustrious career in the armed forces, apart from commanding military hospitals and contributing to the growth of a premier Apex Tertiary Care Army Hospital in Delhi, Sir has been overseeing the largest paramedical training institute in Lucknow and has had several stints in the Army headquarters. His expertise lies in combat medical support, operational medical logistics, healthcare policy formulation, and hospital administration. In academia, he has contributed to a book on emergency medical services, apart from many other books, chapters, and manuals. For his contributions while in service, he has been awarded the Ati Vishishta Seva Medal and by the AHA, the Vivekananda Great Communicator Award. After his retirement in 2021, as the head of the HR in Armed Forces Medical Services, General Behera served as a brief stint as MD of Kalinga Hospital, Odisha's first multi-speciality corporate hospital. Welcome, sir. We are indeed fortunate to have you as a moderator. I've been requested by the moderator to go ahead and introduce the panelists, with your permission. Doctor, sir? Okay, sir. You have? We await the arrival of Padma Shri Dr. Jitender Singh Shunty. Dr. Grewal has regretted he will not be able to join the panel. So I'll request Lieutenant Colonel Yadu Vir Singh to join us on the dais, and Dr. Usha Manjunath, Director, IIHMR, Bangalore. Thank you, ma'am. So Padma Shri Dr. Jitender Singh Shunty is on his way. I'll now hand over the proceedings to the moderator. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have the onerous distinction of bringing up this tail end of this whole conference. And the theme for this session is Resilient Ecosystem, Community and Beyond Hospitals. I'm sure all of you would agree that the contours and boundaries of this topic would be hard to define. While it is complicated, it is also complex. At the level of the community, there is a different focus that is required. I would like to say, I make this statement at the cost of being ridiculed by my doctors' community, that community healthcare requires a population focus. Doctors by training are geared up to treat patients in hospitals. That population focus possibly is not enabled during the training in the medical colleges. And therefore that public health specialty, growing specialty, and
most of the developed nations have this public health training outside of medical colleges. The present Director General of the WHO is a public health specialist, the first non-doctor to hold that position in the World Health Organization. When you talk about healthcare, somehow I get the sense that it is not about healthcare, it is about sickness care. Sickness care is wonderful as far as hospital setting goes. But in the context of the community and beyond the hospitals, healthcare should have a different meaning where the social determinants of health would have to be looked into. Do we require doctors to do that? I'm very convinced we do not require doctors for resilience and healthcare delivery in the community and beyond the hospitals. And therefore, this session, I thank the Academy of Hospital Administration for having decided to discuss this session and also having given me this opportunity to be the moderator for this session with some distinguished, I take great pride in sharing this platform with certain distinguished panelists. I will discuss their background as I come to them. We also have a very eminent panelist, Padma Shri Dr. Jitender Singh Shunty. He'll be shortly joining us. He's at there at the entry. So with that kind of background, where we are looking at a healthcare which actually promotes health, which actually keeps us away from sickness at the community level, how do we sustain that? And sustenance, or rather resilience, what are the parameters? It's been discussed, defined so often. It's about, being prepared, aware, respond, repair, meet those surge requirements, and carry out the functions that they're supposed to do. Given the uncertainties of the risks, there is this paradoxical irony that we are to be geared up for the unexpected, which is expected. What an oxymoron. To be geared up for the unexpected, which is expected. And that is what we are looking at. How do we provide this resilience at the level of the community beyond the walls of the hospital? How do we declutter the hospitals? How do we promote wellness? How do we see that there are less and less the community individuals coming to seek healthcare in the hospital, the sickness care? So with that, I would like to, I think our distinguished panelist has just come in. I will wait for him to join us, and I'll start with him once he is here. Ladies and gentlemen, it's a very proud privilege for me, for the panelists, as well as the audience, to be sharing this platform with someone who's done so much, a household name during the COVID. I would like you to give an acknowledgement by a resounding applause to Padma Shri, Shri Jitender Singh Shunty. I'm so delighted that he shares his platform with us. Somebody who has done so much. Now, we look at healthcare as being hospital, medicines, and all that. But the level of the community, what is it that gives us resilience? Can I stand up to those unforeseen situations? Can I combat those? What kind of solutions can I come out? And it brings in an amount of, devotion,
selflessness. And here is a bright and burning example of someone who during the COVID times, without a concern for his self, went out of the way along with his organization, NGO, Shaheed Bhagat Singh organization, and to pick up unclaimed bodies. And roughly about 4,400 or maybe more than 4,000 that he himself was responsible to cremate and give that honorable last right to all those who died during COVID, who the families have possibly could not and who had abandoned them. Sir, आप इस बीच में होने का हमें बहुत गर्व है और फक्र है. While he was, to begin with, he was someone who was known in Delhi and maybe started off with East Delhi. He spread to Delhi and now he has gone beyond the services that he started off with, where someday he observed some father trying to pick up some logs of wood from a funeral pyre, and he found out that the father was looking for woods to burn, to cremate his child. And that is what stirred him to start what he did. Beyond that, because he saw so much, he has now gone out as an NGO to take care of blood donation, medication, ambulance services. शंटी जी, मैं लेकिन आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ, ये जो मेरे यहाँ बैठे हैं बहुत सारे यंग डॉक्टर्स, यंग एडमिनिस्ट्रेटर्स, बहुत प्रभावित है जो आपने किया है. लेकिन एक चीज़ हमें बताइए कि हमारी समाज में ये जो लचीलापन या रेजिलियंस लाना है, इसमें आप जैसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है. हमें ये सुनना चाहिए कि कैसे हम ये क्या चीज़ जो है हमारे समाज में आपकी तरफ बन सकते हैं. पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही एक बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम है जिसमें क्वालिटी ऑफ पर्सन्स हों, उसमें बुलाकर आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया. मैं अपनी तरफ से, अपनी एनजीओ शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं हमारे देश में हम चाहे किसी भी जाति से हों, किसी धर्म से हों, किसी भी फील्ड से हों, जब भी कोई वक्त बुरा या भयानक आता है, जस्ट लाइक कोविड, जस्ट लाइक भोपाल गैस कांड, उस समय हम सब एक हो जाते हैं और होना भी चाहिए. जो बात आपने पूछी कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए या क्यों आए, उसके 2-3 जवाब हैं. सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स, टेक्नीशियंस, नर्सेस, इन सबको बधाई देना चाहता हूं कि कोविड में इन्होंने भगवान के रूप में काम किया, ईश्वर के रूप में आए. और जब लोगों को कोई आसरा नहीं दिख रहा था, वो उस समय डॉक्टर या नर्स की तरफ देखते थे. स्वैच्छिक रूप से काम करने के लिए एनजीओज अपने आप आगे आई. अगर कोई ब्लड डोनेशन का काम करता था वो ब्लड के लिए लगा, कोई लंगर की सेवा करता था वो लंगर पे लगा. हमारे पास एम्बुलेंसेस थी उस समय, 10 या 11 डेड बॉडी वाली गाड़ियाँ थी, मॉर्ची वैन. तो जब प्रशासनिक लोगों ने मुझसे पूछा कि शंटी जी, क्या आप कोविड के पेशेंट के लिए और कोविड की डेड बॉडी के लिए अपनी सेवा प्रदान कर देंगे, तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि शंटी जी, मौत का मंजर है, पंगा मत लेना. तो मैंने कहा यार, 25 साल से हम सब भी एक फौजी की तरह सेवा कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्योंकि हमने कभी भारत सरकार या दिल्ली सरकार से 25 पैसे भी नहीं लिए इस सेवा के लिए.
और तब तक हम 50,000 डेड बॉडी ऑलरेडी 25 साल में हम कैरी कर चुके थे अपनी गाड़ियों पे। मैंने कहा आज युद्ध का समय आया है, देश के ऊपर एक ऐसा भयानक समय आया है, और फौजी युद्ध लगने पे घर में सो के मर जाए तो शहीद नहीं कहलाता है, उसको युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा। हमको सारी एम्बुलेंसेज भी लगानी है, शव वाहन भी लगाने हैं, और शमशान में खुद खड़े रहेंगे। मौत आती है तो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी आनी है वैसे भी आनी है। मेरा एक ड्राइवर, मेरे परिवार के 2 लोग, 3 लोग इसमें शहीद हुए। उससे मेरे ड्राइवर थोड़े डर गए, मेरी टीम थोड़ी डरी, कहने लगे शंटी जी हमने आपको पहले कहा था ना। मैं खुद डेथ बेड पे, मेरा बेटा डेथ बेड पे, वेंटिलेटर पे। तो मैंने उस समय जवाब दिया, मैंने कहा भाई ड्राइवरों को एक बात कही कि आप ये बताइए हमारे 3 लोगों को दुश्मन ने मार दिया है, अब हमें आगे बढ़ना है, घर में सोना है? कहने जी आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा डट जाओ सेवा के लिए, भाई मौत तो आनी आनी है। जो दिख रहा था दिल्ली जैसे शहर में एक एक शमशान घाट में एक दिन में 200-200 डेड बॉडी आ रही थी, मजाक नहीं था। उसके बाद जब मैं 14 दिन के बाद क्वारंटाइन होकर घर से बाहर निकला, तमाम मीडिया ने मुझे घेर लिया कि शंटी जी अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है। उनको लग रहा था डर गया होगा अब ये कि 3 लोग भी मर गए और ये भी बीमार हो गए बुरी तरह से। मेरा एक दिन तो ऐसे लगा रात को आज अगले दिन नहीं देखूंगा। रात को 35 जिसका बीपी हो और 50-60 ऑक्सीजन हो तो वो क्या सोच सकता है। तो मैंने क्या जवाब दिया मीडिया को, मैंने कहा जी मुझे करगिल के एक जवान की बात याद आती है जिसकी एक आंख में गोली लगी थी और एक आंख नहीं बची थी उसकी। उसको जब मीडिया ने पूछा था तो उसने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसको मीडिया ने ये पूछा था कि आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है, तो उसका जवाब ये था फौजी का कि एक आंख बंद करके दुश्मन को गोली मारता था, अब तो परमानेंट बंद हो गई, टिका टिका के मारूंगा। तो मैंने कहा हमारा भी वही हाल हुआ है कि मर सकते थे ना, मरे। मेरा ड्राइवर चला गया बेचारा, शहीद हो गया। मेरे परिवार की, मेरी साली, मेरा साडू घर से गए, लेकिन अब जज्बा और बढ़ गया है जी, सच जानो तो। और जब हम देखते थे नर्सेज बेचारी 48-48 घंटे काम कर रही थी, पीपी किट में। गर्मी का समय था, अप्रैल मई जून जो समय था बड़ा भयानक समय था। डॉक्टर्स कई कई दिन सोए नहीं जी उस समय, टेक्नीशियंस, क्योंकि ये सब उस समय अगर नहीं होते ना जी तो शायद तहस नहस बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। और उसके बाद 2 तबके हो रहे हैं जिनका बहुत बड़ा रोल था। एम्बुलेंस ड्राइवर, उनकी तरफ कम ध्यान जाता है लोगों का। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरा ड्राइवर एक दिन में 70-80 बॉडी उठाता था। मुझे किसी का फ़ोन आया कि आपकी एक एम्बुलेंस रोड के ऊपर खड़ी है, उसके अंदर 4 डेड बॉडी हैं और ड्राइवर बेहोश है। हम लोग भागे वहाँ से, दिलशाद गार्डन की बात है। वाकई में बेहोश था। हम गए तो पीपी किट पहनी हुई है, पसीने से बुरा हाल। उसको होश में लाए, कुछ मिलता नहीं था आसपास उस समय, गाड़ी में कोई पानी वानी पड़ा था डाला। जब होश में आया तो जो उसने बात बताई मुझे, कहने लगा जी मैं जब हॉस्पिटल से निकला रास्ते में इतनी गर्मी लगी कि मैंने जिससे भी पानी मांगा उसने कहा कि गाड़ी आगे ले जा फटाफट, इसमें तो लाशें हैं कोविड की। किसी ने पानी नहीं पिलाया। इवन देन 1-2 दुकानें भी जो खुली थी उन्होंने शटर बंद कर लिया। और उसके बाद मुझे पता नहीं जी मैं कब बेहोश हो गया। बोले ये सूरत बन गई थी। और वो एम्बुलेंस ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद एक और तबका था, वो था शमशान घाट में सेवा करने वाला, जो 4-4 दिन मैंने देखा है कि सोए नहीं जी। मैंने 21-22 दिन एम्बुलेंस में गुजारे हैं, समझ लीजिए कि मैं 2 घंटे लेट जाता था, नहीं भी लेटता था। लेकिन मैं उनका जब जज्बा देखता था कि बिना खाए पिए हुए और गर्मी में बुरा हाल, हम तो यहाँ बैठे हैं, वो डेड बॉडी के पास बैठते थे जी, बिल्कुल जहाँ टेम्परेचर की कोई हद ही नहीं है, 300 डिग्री 400 डिग्री हो सकता है वो। तो वो एक जज्बे वाली बात थी जी, उससे मुझे बड़ा हौसला मिला जी। इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब ये है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो बताइए, मैं जवाब दूंगा। कि जज्बा उनको देख के, डॉक्टर्स को देख के, नर्सेस को देख के हमारा भी जज्बा बढ़ा। और जब कोई बच्चे को भी हाथ रख देता है ना एक सिर पे कि बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको काम करने का मज़ा आता है जी, और एक शक्ति सी आ जाती है। मुझे वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति जी का फ़ोन आया जब मैं शमशान घाट में था।
तो उन्होंने जो अल्फाज कहे मुझे, कि थोड़ी उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, तो कहने लगे शंटी जी हम आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से शमशान घाट में आपकी टीम पूरी, आपने उस बात को साबित कर दिया जो आपकी कम्युनिटी में सुनते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ, आपने, आपकी कौम ने कमाल कर दिया। तो उससे बड़ा हौसला आया जी। और उसके बाद 27 अप्रैल 2021 रात के 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है। अच्छा, फ़ोन सारा दिन आते थे, कभी किसी मंत्रालय से या किसी एकेडमिक व्यक्ति के या बड़े बड़े ऑफिसर्स के, कि शंटी जी संस्कार जल्दी करा देना, क्योंकि 80 नंबर 100 नंबर ऐसे चलता था, वेटिंग में लाइनें लगी हुई थी। तो रात के 2:30 बजे जो फ़ोन आया, मेरा ड्राइवर ने कहा कि वो कह रहे जी पीएम हाउस से फ़ोन है। मैंने कहा भाई ये भी सिफारिश का ही होगा। कहने लगे जी मुकरर जल्दी बात कराओ। मैंने कहा मेरे कान से लगा दो फ़ोन। तो जब फ़ोन लेते ही उन्होंने आगे किसी को दिया, उन्होंने कहा कि शंटी जी हम आपको लाइव देख रहे हैं एनडीटीवी पे, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से सेवा करते रहिए, जय हिंद। मैंने कहा जी सर कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यार ये हमारे देश का मुख्य सेवक ऐसा भी हो सकता है कि रात के 2:30 बजे हमको टीवी पे देख रहा है, इसका मतलब पूरे देश पे निगरानी कर रहे हैं वो, इसका मतलब तो यही हुआ, उनको चप्पे चप्पे का पता है। और ये चीज़ें भूलने वाली नहीं है, सच जानो। ये जो टर्बन है ना हमारी जी, हमारे लिए एक प्राउड है हमारे लिए। वो अक्षय कुमार बोल रहा था ना कि मैं जब भी किसी पिक्चर में सिख बनता हूं तो ऐसे लगता है मैं राजा बन गया हूं। और ये सच है, हम तो परमानेंट रहे ये सच है, हम राजा हैं। लेकिन मुझे 2 बार जो ज़्यादा प्राउड हुआ, उसमें से एक बार तो वो है जब मुझे एक मीडिया का फ़ोन आया कि शंटी जी एक डेड बॉडी द्वारका में 5 दिन से पड़ी है यार, एक बहू अपने ससुर के पास बैठी है, उनका हस्बैंड कनाडा में है, कुछ मदद करिए ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, हमें आधे घंटे का टाइम दीजिए। और हम 1-1.25 घंटे में पहुंच भी गए, क्योंकि हम कहाँ विवेक विहार, कहाँ द्वारका। बड़ा अजीब हादसा था जी कि इतनी बड़ी बिल्डिंगें, लोग अपने घर से वीडियो बना रहे हैं हमें देख के, उसके घर में कोई नहीं आ रहा है, वो महिला अकेली बैठी है अपने ससुर के पास। डेड बॉडी को पैक किया, नीचे लेके आए, जब रखने लगे हम अपनी एम्बुलेंस में, तो वो बहन जी थोड़ा सा भावुक हो गए और उनकी आंखों में 2 आंसू आ गए। एक माता जी खड़े थे वहाँ पे, कहने लगे बेटा अब क्यों रो रही है तू, अब तो सारा इंतजाम हो गया। तो जो बात उस बहन ने कही उसने मुझे ही भावुक कर दिया। कहने लगी माता जी पापा जी के जाने के आंसू तो मेरे सूख चुके हैं, 5 दिन से मेरे पापा की लाश घर में पड़ी है, मेरे हस्बैंड नहीं है। ये आंसू भावुकता के इस बात के हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ, मैंने बीसीए फ़ोन कर लिया, और आंसू इस बात का है कि जहाँ सारी सरकार दिल्ली की फेल होगी, वहाँ एक सरदार मेरे काम आ गया। तब मुझे गर्व हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जो हमें कहा था ना कि देश शिवा बर मोहे ए शुभ कर्मन ते कभो न डरो, न डरो और स्यों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और दूसरी बार 25 जनवरी को मैं सोया हुआ था रात के, जब लेट नाइट मुझे फ़ोन आता है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि शंटी जी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सोया हूँ। कहता सोइए मत, जाग जाइए, टीवी लगाइए, स्क्रॉलिंग में देखिए आपका नाम चल रहा है, राष्ट्रपति ने आपको पद्मश्री के लिए घोषित कर दिया है। और जब मैं गया अवार्ड लेने के लिए दीवाने खास में, उस समय मुझे भी भावुकता इसलिए हुई कि 140 करोड़ की आबादी, 102 लोग पद्मश्री के लिए, और अकेला मैं 1.25 लाख पगड़ी वाला वहाँ बैठा था। तो ये सब सच बोलूँ मैं, हमने कुछ नहीं किया। मुझे जब मोदी जी ने बधाई दी, मैं अवार्ड लेके बाहर निकला, जफ्फी डाली उन्होंने, और कहने लगे शंटी जी जज्बा कहाँ से आया आपके अंदर। मैंने कहा जी जिस देश का रक्षा कितना बड़ा सामने खड़ा हो और उसके काम को देख के जज्बा तो आ ही जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी का हम वंश हैं,
तो बड़े खुश हुए इस बात को सुन के, लेकिन मैंने ये भी कहा साथ में, मैंने कहा जी अवार्ड मुझे नहीं मिला है, मेरा अवार्ड नहीं है। कहते किसका है फिर? मैंने कहा ये मेरे ड्राइवरों ने जो मेहनत की है ना जी, ये उसका जज्बे का, उसकी खातिर मुझे अवार्ड मिला है, ये श्रेय उनको जाता है सारा। मेरे शमशान घाट में करने वाले, काम करने वाले कर्मी, मेरे अपने बच्चे दोनों, मेरा बेटा लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो मेरे साथ लगा रहा, लाशें उठा रहा था। इस तरीके से परिवार का सहयोग भी मुझे बहुत मिला, तब जाके हम कर पाए। और आपका कर्जा तो देश उतार नहीं सकता है, लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूँगा छोटी सी, कि कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को भी कई बार गंदा कर देती है। जहाँ एम्बुलेंस की फ्री सेवा हो रही थी, तो वहाँ ऐसे भी लोग थे दिल्ली में जो 50-50 हज़ार रुपये भी ले रहे थे, लाख रुपए भी ले रहे थे। ऐसा नहीं था तो 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का कैसे बिका? ऐसे लोग भी थे दिल्ली में जो ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहे थे। उसमें कई हॉस्पिटल्स ने भी, कई, सारे नहीं कह सकते आप, हर तरीके के लोग होते हैं। पहले तो उन्होंने बिल बड़े मोटे मोटे बनाए, उसके बाद जब डेथ हो गई, बहुत लोग परेशान हुए बेचारे कि उनकी लाशें मिलने में दिक्कत आई। और यही एक कारण था कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने पीछे जो एक ऑर्डर किए ऑल चीफ सेक्रेटरीज को कि कहीं भी किसी की डेथ होती है तो परिवार की मजबूरी को देखते हुए अंडरटेकिंग लेके उनको डेड बॉडी तुरंत दी जाए। तो मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि परमात्मा ना करे ऐसा कभी माहौल बने जो कोविड में बना है, हमारे देश में बहुत बड़ी त्रासदी थी। तो ऐसे ही साथ सबको देना चाहिए जैसे सबने किया है। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। I don't know, see, one has to hold his head in shame when you hear that dead bodies were lying for 5 days. The amount of black money that went into monetizing illness, something that we cannot be proud of. But yet, it is such organization and individuals see the humility and humbleness, and they are the ones that confers resilience on us, on the system. While I now would like to go to a system of healthcare in the community and beyond hospitals, I have on my left a very distinguished panelist, Dr. Usha Manjunath, Director of the Indian Institute of Health Management, Bangalore. She's a PhD in Management Sciences, expert on system design, system analysis. Who best for me to reach out to get some answers? It's a system that was found wanting, yet it is a system that has a lot of credit to it. Globally, the system was found to have done well in many areas. Some places democracy and social cohesion. As I listened to Sir in the beginning, I thought this is a very important part that we have to really add the dignity of even the people who are dead. So our, important aspects of how do we deal with this, what this whole social sustainability will all come to. Before I really go into, I will be talking about some of the experiences we have felt and we have experienced, the insights we have gained in the area of community-based aspects of community health and how we have been able to do certain aspects of impact. So whenever we take up community-based projects, and what we really look at is what are the short-term effects. But then when we talk about impact, it really goes into about a timeline of 4 to 5. So when I talk about sustainability, where the change is sustainable for longer and positive, like we are talking here about health and wellness, I think it's a very, very long-term aspects of how we really look at. One of the projects that we did during COVID was we were technical partners to Karnataka government
supported by UNICEF on COVID-appropriate behaviors and COVID-sensitive behaviors, because a lot of the programs also suffered during that time. We had to put it back onto. So we approached a lot of, our approach was on social behavior change communication. We use a lot of communication strategies, but the social part is built into it, and therefore we have to really now, the focus is on the social change as well through communication strategies. So we worked in 31 districts of Karnataka, and there was the social behavior communication coordinators working with the line departments of 5 line to 6 line departments at the district level. So when we build this ecosystem of change, and hopefully that it's going to have an impact and sustain, I think it's a multiple levels of changes that we really need to bring about. So we all talk about intersectoral coordination and others, and during this time we were really able to work with the line departments on a focused approach of COVID-appropriate behaviors. So the government departments were involved, the community levels were involved. We also involved and we worked with NGO convergence models. We were looking at data. So we were also looking at various parts and of the community itself. It could be religious leaders, it could be NSS in the colleges and institutions, it could be the SHGs in the communities. So what the whole system was really drawn into kind of looking at who are going to be the influencers, how can we really build a system which would really function, because we were not having a huge manpower to bring about those changes. We were actually planning in a systematic manner, working with various people and working with data to really look at. So I think this change and system building and the design, how we really look at, and what is the focus of that, and how do we give back the feedback to the system was also a very important one. And I think, at this level, we also think it's very, very important. Any of the programs that we involve is in terms of the community involvement, engagement, but then the best would be to how to really look at a mobilizer, where the mobilizer comes from the community, where the change can be really made and sustained. And in fact, one of the most important examples we have seen with NRHM and ASHA being a very important role in the healthcare, and the maternal and child health difference that we have been able to make is because the ASHA is from the community, and then she is a part of the community, and the change has been possible to sustain. So now moving ahead, what are some of the things that really affect and how do we really move ahead is one of the most important is in terms of what we call as health literacy. And then this can also be supported a lot by technology innovation. As we really understand that, it is the technology which has changed. I'm sure those of us who are not able to adapt, let us say for me, even the UPI or the payment, my own, person in the community, the Rediwala, was, using, and I was afraid of the security or the money, but then he was using, the UPI or the Paytm or the Google Pay, and then that changed. So what has changed in the community is the ability to access technology through the mobile phone. So many of our technology innovations now will continue to focus when we look at health literacy, and mobile innovations are going to be the way to go. So that's one part of it. In terms of moving ahead with reference to the prevention maybe, or in terms of early detection, screening, or health changing behaviors, we really are going to be challenged, because now it is not as so focused as maternal and child health, which within about 15 to 20 years, we have made a major stride. Yes, there are a lot more to go, but this is where we will face a major challenge in terms of the NCDs, where the lifestyle changes and the communication is not going to be that easy to really do. So that is one area where we really have to look at how do we make this health literacy, how do we make these life changes,
as well as, sustain this, because now it has really become a more, a pandemic, but an endemic, and then India is known with, the NCD rates are very, very high. And it is not only the urban, the haves which have, the rural poor people also have this. So this is where I think a whole lot of, whether it is the hospitals, so the ecosystem now has to really reach out to various levels of people. And another is the accident and trauma. And I think, safety behaviors, these are other from a, health literacy perspective, changing behaviors, resilient, to make the communities resilient. This is a major area. So for all of us working in the health sector, these are some of the ways that we really look at. The other, of course, is the stress management as we really look at. So, one is the information access, mobilization, and going ahead and using technology, and looking at multiple ways of, collaborative networks that we can really create. I think with this, maybe for another round, I would really look at, and in terms of making the system very resilient, so that the people are really a part of that decision making, and be a part of really understanding. And health literacy is the key to really look at that. Excellent thoughts, ma'am. Health literacy, the communication. The National Health Policy and many earlier resource documents of the government talked about creation of certain cadres, the public health cadre and the public health management cadre. There are some states that have done wonderfully well. Tamil Nadu is one of the examples of having a public health cadre well before independence. And the health indices speak for themselves of a wonderful community-based healthcare system. Not many states have been able to implement this because it was left to the states. These were draft recommendations for the states to adopt. I come from Odisha. I'm very proud to say that Odisha was one of the states which promptly started the public health cadre. So those cadres need to get into positions very fast for the community resilience and community capacity, capability, and to do all that she brought out. Somewhere the machinery at the state level has to get into this. The community engagement model that she talked about, the NGOs and all that, the participation in the community, unless it is linked to the livelihood, is very difficult to be given the kind of socio-economic conditions of our community, the rural settings. Unless those models are linked to livelihood, they're not going to be sustainable. They're not going to be resilient. Some sharp thinking is to be done by our NGOs. How do we go it? She did mention about disasters, so I'd like to talk about, the WHO says the single threat, largest threat to mankind is the climate change. The climate change is linked to all our environmental and social determinants of health. And it affects largely the low-income and the middle-income countries. And we are blessed or cursed to be in such a place where we are plagued with such catastrophic events. Whether it is disaster, whether it is humanitarian assistance, our resilience of the society has to come out of this. How do we respond? How do we adapt? How do we quickly get things back on road? The one area where I'm proud to say that the armed forces have been there, though not the fast responders, often the ones on ground who have the confidence and trust of the nation. And today I'm very proud to say today is Vijay Divas. Vijay Divas, if you recall, 16 December 1971. We celebrate that. Let me say it is not a military victory. It was a humanitarian victory. It was something for justice,
and for good of the society. So it is the armed forces, so often visible on our television screens, who reach out, and when the public sees those uniformed personnel, including our friends from the police forces, uniformed services, there is confidence. I have with me on my panel, Lieutenant Colonel Yadu Vir Singh. He is a community medicine specialist, epidemiologist by training. He's joined the armed forces from the prestigious AFMC. He's done his MBBS and post-graduation from there. But he could have just been a doctor and carried on. He's a crazy person who decides to volunteer to jump from 35,000 feet from the air or 1,200 feet. He's a paratrooper, a special forces, which you will understand is a commando. You can count on your fingers how many of this kind of personnel we have in this country who give us this strategic capability. His early careers, he's been in special ops, which we call for you the commando, in CICT environment. And presently, he's commanding the 60 Para Field Hospital, a very elite unit of the armed forces, a medical unit, which is designed to jump from the air with their medical equipments behind enemy lines without any concern for backup or link-up forces, drop down, establish a hospital, operate on the casualties on the other side of the border. A round of applause for this gentleman to my right. That day the DGFMS did mention, here is the officer who led the armed forces team to Turkey. But that unit, 60 Para Field Hospital, has been doing this for many years since the Korean War of 1950. Now, sometimes we also, yesterday in fact, somebody made a mention that the armed forces medical resources are wasteful, are lying idle. While I would not like to take offense to this thought, but like to say that the armed forces medical resources are meant for a particular purpose, to ensure the combat potential of the armed forces of this country. To retain the readiness, the soldier should feel that even if I jump behind enemy line, the chances that I will die or lose my leg, but my Dr. Saab will pull me out of the jaws of death. So those resources are not idle. Besides, there are bureaucratic issues, there are policy issues, there are rules issues, there are audit. If I treat a civilian and the audit comes, sir, how did you treat? Where was the budget? So this thought that somebody made a mention yesterday that the armed forces medical resources are spare. It is not spare. It is there for the combat readiness of this country. So I like to come to Colonel Yadu Vir to ask him not what he has done. What he has done is commendable. Everyone has already applauded. But how does he maintain this responsiveness? How does he keep himself prepared? Please understand his primary role is to jump behind the enemy lines and fight the enemy with his weapon at the peril of his life. But yet he is able to respond to such situations of calamitous situations. How does he do that? What is it that he has? Maybe he'd like to share it, because there will be someone in this audience who would like to go back and do that in the community, that resilience is spread amongst other organizations as well. Colonel Yadu Vir. Thank you, sir. I'm really honored to be sitting here amongst you all, doyens of the specialty. And I thank Academy of Hospital Administration, especially Jagtar sir, to have given me this opportunity. Sir, you very pertinently brought out that our primary role, Army's purpose is not humanitarian assistance. However, it is best suited for the initial primary response to any disaster. Why? It's same as we are talking about the topic here, which is resilience. Resilience is our primary motto, our forte. We have to be prepared for anything unseen, unforeseen. There was a quote you must have heard that the first casualty of war
is the plan of attack. Whatever you have planned for, with the first bullet fired, it goes for a 6. And then you have to replan, adapt, and to find out the other ways, make another target, see if it is working, again reevaluate, and move ahead. So, my job, like Sir said, it is to provide medical aid behind enemy lines. I have to be catered for lightweight, and I'm catering for the population which is the fittest population. Majority is that they have to be, I'm catering for their wounds of trauma, surgery, and life and death situations. I'm not catered for a geriatric population. I'm not catered for a pediatric population. I'm not catering for obstetric emergencies, which I have to for a humanitarian assistance when I have to go for such kind of missions. So I have to prepare separately for that. I have to make load tables accordingly. I have to plan my specialist, which I have to need additional specialists for them. My surgeon assists are not sufficient for that. I have to train my manpower, and these needs additional hours of training. The first is the mindset in armed forces. Like we are the last line of diplomacy, so we cannot say no. When it comes to us, we have to do it either way. So that preparedness, the first is the mindset. I will draw a corollary with your hospitals. You are in the civil population, you are the hospitals taking care of. In the ideal situations, you have got the best of the facilities. You have got the norms for care, the best of the care you're providing. But you have to think. The first step is that thought process, that yes, things can go wrong. And when things go wrong, how do we plan for it? So that first is the thought process, and second is the will. Once you have the will, everything else will follow. So the basic principles, what I say, is first a good leadership. All your hospital administrators have to make your team prepare for the worst case scenario. Second, you have to make them prepare for then adversity to function in a small teams. Ideally, you have the luxury of functioning in a well equipped operation theater. You are doing surgeries with everything at the back of your hand. But in case a disaster happens, your hospital is structurally not capable of functioning. You should be able to perform in small teams. It could be a surgeon assist with 4 nursing assistants, operating room assistants, whoever you can say nurses. You can move out. There should be earmarked equipment kept. Yes, this equipment will be taken by this team. You know where it is kept. You know how it can be taken. It should be earmarked. And you have to follow the drills for that, like we do. Every week, at least twice, we are out, whether it's cold or raining or whatever, we have to practice those drills. So first is the planning to do this. Second is practicing. The other aspects which I can say, you have to be prepared. What we prepare for these kind of situations is duplicity. Duplicity in your load tables. Like we have to prepare for non-arrivals. I'm going for a humanitarian mission. I needed 2 aircrafts. We are going there. First aircraft landed, second didn't come. Could be anything. This happened in Turkey. We were expecting our resupplies at Adana airport. The aircraft didn't land there. Realized it reached Gaziantep. Now imagine you have to get the supplies around 5 hours away, and the whole, we have to plan it in another city, and we have to get resupplies, otherwise we can't function. So always be prepared with duplicate load tables, so that load tables, I would say, the equipment which you have, this equipment is functioning, this is earmarked for your disaster preparedness. Secondly, the role of a person, if he can be trained for a dual role. Like my X-ray assistants, I've got only 2. So I will train my nursing assistants to do a role of the X-ray assistants, because I know they will be overloaded in this kind of scenarios. So these kind of training of a dual role, if you can do, so probably you will be prepared for such kind of contingencies, and this is what I could draw as a corollary for your infrastructure which you have as compared to mine. So I'll rest my case. I'd just like to amplify that
during the last Nepal earthquake, this unit had deployed a field hospital in Kathmandu airport. But they sent out small teams, as he was mentioning, a surgeon and an SSS and two other, we call it a man-pack advanced dressing station, which they converted into a man-pack surgical team. They went out into the remote areas in helicopters, reached out to the villages and where roads had just disappeared to do surgery. We are looking at modular OTs and air changes, infection control, but that is the condition on which they operate and make a difference. We save lives, we save limbs. We are not looking at definitive care. Colonel Yadu Vir, are there any government initiatives to create this empowerment amongst the community for this resilience to develop for managing afada or disasters? Yes, sir. In 2005, December, when the Government of India enacted the National Disaster Management Act and envisaged the coming of National Disaster Management Authority under Prime Minister and State Disaster Management Authorities under the Chief Ministers, that organization has been working very well and they're evolving. Recently, they have initiated a scheme which is called as Apda Mitra scheme, in which they're training volunteers among all the disaster-prone districts. And it is a 12-day residential training. There was a pilot project they conducted in which they trained 6,000 residents in 300 districts, 20 each. Now they are aiming at training 1 lakh these volunteers, because there has to be, like you see sitting on a right, Padma Shri sir is a volunteer, and finally he made such a difference. So government is trying to promote this volunteerism, and it can take to another level, because community is the first responders. By the time we reach, also we reached in a record time to Turkey, but it was at least 24 to 48 hours we took to establish. But this community is the first responder. If you empower them by first is they're making them aware, and second, equipping them with knowledge and equipment. So in this Apda Mitra scheme, they are targeting these volunteers, especially between the age of 18 to 40, and they're focusing on more of retired people. They can change the age also for in armed forces and home guards and fire services and all. And they are covered, they're giving them training, 12 days residential training, and then equipping them with a kit, which is basically for search and rescue and first aid, which they can respond immediately. And they are also covered by an insurance policy. Like sir said, there has to be a livelihood for that, coverage for that. So now they are covered for hospitalization, death, and permanent disablement by an insurance, because they're volunteers, they're working at their own pedal. So I hope, sir, this scheme should take on, and they should further empower us to do. All right, that brings me in this course of this panel discussion to a very important point. I generally don't wait for the audience to throw a question at me. I would reach out to people in the audience, and I'll request my colleague, Dr. Sajal Sen, a mic to be please given to him to great resource. My question is, now this is about Rokoda. Honorable Minister for Roads and Transport, Mr. Gadkari, made a remark that there is money. Many in the audience says there is no dearth of money. I'm sure smart investments, financing, blended financing, philanthropic financing, all kinds of financing are there. But somehow it doesn't seem to work on ground. But my question, sir, to Dr. Sajal, who my ex-armed forces colleague and now more than a decade in the heading many hospital corporate sector. Sir, how can the hospitals, you've been in the corporate, sir, and private, how can they reach out to the community to confer, that fortify their systems, confer resilience? There are those CSR initiatives. I would like to hear, or rather the audience would like to hear your thoughts. You are hands-on in it, sir. Thank you, Yadu Vir, sir, for taking me on this particular question.
Let me, clear a myth normally that corporate hospitals or private hospitals are rogues in the community. I think that is more than a exception than a rule. Most of the hospitals which are there are providing human services, and services, they are filling the gaps between what the public health system can actually offer and what is actually demanded by the community. Having said that, I think during the COVID time also, lots of our hospitals collaborated with lots of communities which never came to light. I'll give you an example. During COVID time, I had the pleasure of having served with Apollo Group and then subsequently with Tata Trust. So I have seen the first part with the Apollo Group and second part with Tata Trust. So when it came to Apollo Group, I think when the hospitals which I was heading, I used to get calls, sir, I have got a COVID patient and what is the package? I said, there is no package. We don't use package. Whatever, it's a viral fever, whatever is required to be paid by any patients in the regular tariff, we will charge that only. There's an extra element of our expenditure which is returning to PPP, for which we will give you a separate bill that this is how my landing price is, and I will charge you only on landing price and you can take the invoice. And I have done it with the blessings of my own chairman, Dr. Pratapa Reddy, and he also said that please do not charge anything beyond that. Some of the Apollo chain, they defied his orders and some of the unit heads, they had to, they had to be punished subsequently. But we followed that. That was number one. Now my second part is when I went with the Tata Trust, I was in the Northeast and I became one of the advisors to the core group of the trust to see how they can reach out to community. And I created a WhatsApp group of some 40, 50 doctors within the Tata Trust ecosystem and outside who were being reached out by community at every time. And I myself must have treated more than 100 people at home because the panic had to be restored. Everybody did not require hospitalization during that time. And the best part is, one day we were taken a virtual meeting and Honorable Chairman, Mr. Ratan Tata, he told me, Doctor, I think you only understand COVID. Why don't you see that I have got more than 1 lakh employees and every day I get a call that I'm not getting a bed, I'm not getting a bed. I am opening all my 5-star hotel to be converted into hospitals. And he gave me IHCL, Taj Palace, everything. You said you take all the rooms and you open it. And I said, sir, but for that, I would require medical manpower to man it. You can give it the organization. With my networking, last 15 years working, I went to many corporate hospitals and cooked up a deal. And I'm telling you, all of them came forward at a very rock bottom fee because they will definitely have some spends. They took the brunt. And I think all the major groups, they said, we will come forward and we will man those. And we manned a few hotels where we kept some of the patients who were not getting. So these are some of the examples we are saying when it comes to time, we definitely reach out to the community. Only thing is, because the perception is that they are a money making or some black sheep are there in every profession, be it lawyer, be it chartered accountant, be it whatever. Lastly, we have a mandate of reaching out to community. Like in Apollo Group, my chairman says that you should do 1 million health checks. You reach out to community, do it for free. So we have vehicles going every day, somewhere or the other in the country and doing basic checks on NCDs, diabetes and this and that. And we give them that and we never tell them to come to our hospital. And we give them a format and we say, who is the nearest doctor? We tell their name and say, you go there and get yourself treated further. So these are some of the incentives which we are doing. And only thing is, everything is viewed with a color of saying, oh, they are marketing. It's not like that. It's a $23 trillion wastage which the government will suffer if we do not control the NCDs till 2050s. Many of the studies stays, and my chairman keeps telling us. And my KRA as a unit administrator is, he doesn't ask me how much money you have made. The first thing he'll ask, how many health checks you have done and in the community. So these are some of the things which we do. Thank you, sir. मेरा अगला सवाल आदरणीय शंत्री जी से। सर, एक एनजीओ हमारी समाज में होना जो रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। आपने बोला जज्बा से चलता है। हमारे में से बहुत होंगे कल एनजीओ चलाएंगे। जज्बा तो बहुत जरूरी है शुरुआत के लिए, चालू रखने के लिए सर पैसा चाहिए। मैं आपसे ये
नहीं चाहता हूं कि आप कैसे करते हैं, बट क्या तरीका है सर? ये एनजीओ लोग कभी सोचते हैं यार मैं कैसे चलाऊं, मेरे को कहाँ से फंड है, सस्टेनेबिलिटी कैसे होगा, उस ड्राइवर को कैसे पैसा दूं, उस पेट्रोल कहाँ से लाऊं एम्बुलेंस के लिए, उसके पेयर पार्ट्स कहाँ से लाऊं, वो बॉडी बैग्स कहाँ से लाऊं? सर थोड़ी सी आपसे ये जानकारी की, क्योंकि आप बहुत जुड़े हुए हैं जमीनी हालत के साथ, कि एनजीओ चलाने में क्या जज्बा से ही हो सकता है, और ये पैसा अगर आते हैं तो सर कैसे लाया जाए? इसमें देखिए मेरा वो कोई मतलब नहीं है कि 2 नंबरी ये, क्योंकि ये एक फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड है, वो आती कैसे? बहुत ही जज्बाती क्वेश्चन पूछा आपने। बिना जज्बे के तो कुछ नहीं होता है जी, ना सेवा होती है ना बिजनेस होता है। और जहाँ तक संस्थाओं की बात है, एनजीओज की बात है, 90% मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि लोग बना तो लेते हैं, फिर चलाते समय सोचते हैं कि फंडिंग कहाँ से आएगी। क्वेश्चन आपका बहुत ज़बरदस्त है। लोगों के दिल में भावना ये होती है कि शायद गवर्नमेंट पैसा देगी। बायलॉज ये कहते हैं कि 5 साल पुरानी एनजीओ होनी चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शन अच्छी होनी चाहिए, काम करने के उसका अच्छा सा कोई प्रोफाइल होना चाहिए, लेकिन फंडिंग फिर भी नहीं मिलती, बता दूं मैं आपको। वो इसलिए नहीं मिलती कि लोग एक सब्जेक्ट पे नहीं चलते हैं। आज एक एनजीओ खोलते हैं ब्लड डोनेशन से, 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करेंगे, मैंने गौशाला खोल लिया जी। अब क्या किया जी तूने, अब मैंने नाइट शेल्टर खोल लिया जी। भटक जाते हैं थोड़ा सा, वो उनको गाइडलाइन अच्छी नहीं मिलती है। एक होता है प्रोफेशनल तरीके से बनाना किसी एनजीओ को, एक होता है कि स्वाभाविक बन जाना। मैं स्वाभाविक वाला हूँ कि जब मैंने 95 में किसी व्यक्ति को दिल्ली के निगमबोध घाट पे, शमशान घाट जिसे कहते हैं आप, लोगों की जली हुई अधजली लकड़ी के टुकड़े को उठाते हुए देखा, तो हमारे दोस्तों ने और मैंने सोचा कि चोरी कर रहा है। और जब उसको रोका टोका तो उन्होंने जो बात बताई, उसने उसे हमें हिला के रख दिया कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उन्होंने बताया कि मैं अपने बच्चे का इलाज कराने आया था दिल्ली में किसी गांव से, बच्चा नहीं रहा, और आज सुबह से मैं और मेरी मिसिज निगमबोध घाट पे बैठे हैं, हमारे पास 5,000 रुपया नहीं है, इसलिए संस्कार नहीं हो रहा है। बहुत संस्थाओं से मांगे, लोगों से मांगे, 50-100 रुपये से कुछ नहीं बनने वाला है। आखिर किसी ने कहा कि रात होने वाली है, आप ये जो लकड़ी के टुकड़े बचे हुए हैं ऐसे उठा के संस्कार कर लीजिए आप। तो मैं इसलिए उठा रहा हूँ। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं। उस दिल्ली में खड़े हैं जहाँ पर लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी में, शादी में, मकान में, कार में करोड़ों रुपए लगाते हैं। वहाँ एक व्यक्ति अपने बच्चे की लाश को लेके बैठा है। वो मेरा पहला संस्कार था। और शाम को ही हमने आपस में मीटिंग करी। मैंने कहा हमने निश्चय करते हैं कि हम एक शमशान घाट से शुरू करेंगे, आगे जैसे ईश्वर करेगा। हम भी कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, कोई अच्छा फंडिंग नहीं था, लेकिन हमने एक शमशान घाट अडॉप्ट कर लिया। लोगों ने बहुत फफ्तियाँ कसी, कईयों ने कहा इन्होंने लाशों का व्यापार शुरू कर दिया है। कोई कहने लगा, मेरा सगा भाई कहता था यार ये क्या कफन वफन बेचने का काम शुरू कर लिया है। मतलब ये बातें सुनने को मिली हमें, लेकिन हम रुके नहीं। जोगिंदर सिंह जी से, सीबीआई के डायरेक्टर, मेरी थोड़ी अच्छी बातचीत थी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा ये काम शुरू किया है। तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया। कहने लगे शंटी जी एक शेर सुनाना मैं तो करतार सिंह सराभा ने बोला था। ही वॉज द वेरी बिग फ्रीडम फाइटर। बहुत छोटी उम्र में उनको कुर्बानी देनी पड़ी कि सेवा देश और कौम दी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां ने, जिन्हां इस सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां ने। आपको मुसीबतें भी आएंगी, आपको लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी। आंखें खुली रखना, कान बंद रखना और काम करते चले जाना। हमने 17 शमशान घाट अडॉप्ट किए जी। और जब ये लगा कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल से घर लाने के लिए और घर से शमशान लाने के लिए व्हीकल नहीं मिलता है,
शव वाहन नहीं मिलता है, कोई टेम्पो में ले जा रहा है, कोई रेडी में ले जा रहा है। तो हमने कहा ऐसी गाड़ी भी होनी चाहिए यार। तो मेरे पास अपनी 800 कार थी उस समय, यही चलती थी 95 में। मैंने वो 60-62 हज़ार की बेच के कुछ थोड़े और पैसे मिला के हमने 68 या 70 हज़ार की एक छोटी सी पुरानी सी एम्बुलेंस ली। हमने शुरुआत की, वो नेक नीयत से काम किया, ड्राइवर भी वैसे मिले, साथी भी वैसे मिले, और आज 27 साल के बाद हमारे पास 32 एम्बुलेंस और शव वाहन हैं, 60,000 से ज़्यादा डेड बॉडी उठा चुके हैं। और आज तक ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक सिंगल पाई भी हमने पैसा नहीं लिया, सिंगल पाई भी पैसा नहीं लिया। अब आप कहेंगे आते कैसे हैं पैसे? जब हम कोई काम जज्बे से करते हैं ना, उस समय लोग खुद चल के आ जाते हैं। जब जैसी कोविड आया, जैसी सरकार ने मेरे से गाड़ियां मांगी, मैंने एक अपील डाली। क्या अपील डाली? कि हमारे शमशान घाट पर लकड़ी नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान है नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। कोई कहता भगवान है, कोई कहता नहीं है, कोई कहता किसने देखा है। मैंने देखा है भगवान, मैं साक्षात बताऊंगा आपको कि रात को 68 डेड बॉडीज मेरे शमशान घाट में और लकड़ी नहीं है, बिल्कुल लकड़ी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई, पहले डेड बॉडीज दिखाई, फिर मैंने जहाँ लकड़ी रखते थे उस स्थान दिखाया कि हमारे शमशान घाट में लकड़ी ख़त्म हो चुकी है। कोई भी अगर मदद करना चाहता है तो हमारी मदद कर सकता है। कुछ चारा ही नहीं है, रात को हम कहाँ से लाएंगे लकड़ी। और जहाँ मैं खड़ा हूँ शमशान घाट में, उसी के अंदर एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है और लेफ्ट साइड पे एक गुरुद्वारा है। मैं उस तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ और मैं बिल्कुल प्रेयर के मूड में, हमारे रिलीजन में कहते हैं अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा इज्जत रखना है यार, 68 डेड बॉडी है, लकड़ी बिल्कुल नहीं है। सुबह क्या होगा हमारे साथ? लोग कह रहे हैं तुम बॉडियां तो रखवाए जा रहे हो, संस्कार कैसे करोगे? सुबह 3:30 बजे एक फ़ोन आता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है गाजियाबाद से आगे नोएडा में, वेव सिटी, उनके मालिक हैं राजू चड्डा जी। कहते शंटी जी मैंने आपकी अपील सुनी है और मैंने जहाँ जहाँ ऑर्डर कर सकता हूँ कर चुका हूँ। 500 टन लकड़ी मेरी तरफ से आपके पास आ रही है, 500 टन, 500 किलो नहीं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, 8 बजे या 7 बजे के बाद कोई लेडीज़ आ रही हैं कार पे, अपनी इनोवा कार में कुछ लकड़ियाँ लेके आ रही हैं, कोई टेम्पो में लेके आ रहा है, कोई ट्रैक्टर में लेके आ रहा है। और ये हालत हो गई 2 दिन के बाद कि हमें बाहर बैनर लगाना पड़ गया कि लकड़ी का लंगर है, जितनी लकड़ी चाहिए फ्री ले लीजिए, कोई पैसा नहीं है यहाँ पे। ये काम करने का तरीका था, लोगों को दिखा। अब पीपी किट पे आ जाते हैं। पीपी किट से पहले मैं मॉर्चरी बैग की बात करता हूँ। दिल्ली पुलिस ने बहुत काम किया कोरोना में, मिलिट्री ने बहुत काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, होम गार्ड, सिविल डिफेंस ने किया। लेकिन मेरे क्षेत्र में ना तो पुलिस स्टेशन में और ना हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के बड़े बड़े 2 हॉस्पिटल हैं इस दिल्ली में, मॉर्चरी बैग नहीं थे जी उनके पास। सुनने की बात है, डेड बॉडियाँ 24-24 घंटे स्ट्रेचर पे पड़ी हैं, स्ट्रेचर भी कम पड़ गए उनके पास, कोई नीचे पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है। उसके लिए मैंने अपील डाली, 5000 मोर्ची बैग मुझे 2 दिन के अंदर आ गए। लोगों को दिखाइए कुछ कर रहे हैं यार। जब कोई घरों से निकल नहीं रहा, अपने बच्चे अपने बाप की लाश नहीं उठा रहे हैं। सच जानो, जो चीज़ें हम गुरबानी में पढ़ते थे ना, प्रत्यक्ष देखी है मैंने कि बेटा खड़ा है, बच्चे खड़े हैं, बाप की लाश पड़ी है, कोई बहाना कर रहा है कि बीमार हूँ, कोई कहता डर लगता है। लेकिन जब हम डेड बॉडी लेके चलने लगते थे तो जो जलालत करी कई लोगों ने, किसी ने बाप की अंगूठी उतारी हीरे की, किसी ने माँ की बालियाँ उतारी, किसी ने अंगूठे लगवाए। उस समय मुझे याद आता था गुरबानी में जो लिखा था कि जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से वहीं सब लागे, क्या दारा क्या मीत। सच्चे दिल से एनजीओ ने जिसने भी काम किया, अगर हमने शमशान घाट के लिए, मैंने लंगर की अपील करी, मुझे लगा यार सुबह से लोग आते हैं, अगर 200 डेड बॉडी भी और 5 या 4 बंदे भी एक के साथ हैं तो 800 बंदे हो गए। अब इनको नाश्ता भी चाहिए, लंच भी चाहिए, शाम का भोजन भी चाहिए, चाय भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गर्मी बहुत है। तो मैंने 5, 7, 10 लोगों को फ़ोन किए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 4-5 दिन में ऐसा माहौल बन गया मेरे यहाँ कि 500 डब्बे सुबह नाश्ते के आ जाते थे।
1000 डब्बा लंगर आ जाता था लंच का, पैक बिल्कुल, कोई खोला को खाता नहीं था शमशान में। पानी की 100 पेटियाँ, कोल्ड ड्रिंक की 100 पेटियाँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एनजीओ अगर सच्चे दिल से काम करे और वो काम दिख रहा हो, बशर्ते दिख भी रहा हो और काम हो रहा हो। भाई आटे में नमक तो चल सकता है कि मैंने 100 चीज़ें मंगाई हैं, 98 खर्च कर दी, 2 नहीं खर्ची हैं, लेकिन मैं 40 मंगा के या 80 मंगा के उसमें से 10 भी खर्च नहीं करता हूँ, तो दुनिया को वो भी दिखता है कि अरे कर तो कुछ भी नहीं रहे हैं। अब जो 32 एम्बुलेंस मैंने बोल तो दिया आपको, ज़रा सोचिए ना, उनके ड्राइवर, उनका डीजल पेट्रोल, उनकी इंश्योरेंस, उनके टायर, उनकी बैटरी, उनके मेंटेनेंस, उनकी पार्किंग का किराया कितना होगा, ज़रा सोचिए आप। इतना बड़े नेटवर्क तक हम कैसे पहुँचे? इसका एक ही जरिया है कि अच्छी नीयत से काम करो, नेक नीयत से काम करो, देश के लिए काम करो, मानवता के लिए काम करो। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है सफल होने से, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। इसलिए एनजीओ खोलें तो स्वैच्छिक रूप से खोलें और ये सोच के चलें कि पहले अपना घर लौटा के मैंने तमाशा देखना है, मैंने लोगों से पैसे इकट्ठे नहीं कर रहे हैं, अच्छे दिल से करेंगे, लोग पैसे देने खुद ब खुद आएंगे। धन्यवाद। I'm actually ashamed to be sitting here listening to all this. I mean, look at the commitment and selflessness in whole this. But he has possibly become a beacon to attract assistance. His stature is much above the average administrator or owner of an NGO. He will attract finance. And I don't hesitate to say also that he comes from a community which believes in Seva. So there would be that scope that with his junoon that he has managed. But look at the aspect of health. If health is at risk, all else is at risk. And should we think of investment in health to be contained for cost cutting? 1.26% of GDP by the government, and maybe total somewhere around 3.6, all inclusive, is way below what the BRICS do. Well, yes, they have a different model. Brazil has about 9% of GDP. Russia and China and South Africa somewhere around 5, and we are down there. The Honorable Mr. Gadkari says there is no issue of IRR in healthcare. I'm troubled by this. While the NGO sector may be able to do it, but there are so many other schemes that are floundering. Mr. Gadkari changes rules. He's got a very empowered leadership position to do all that, decide the rules of the game. Maybe in my healthcare, that kind of empowered leadership is not there. Leadership, governance, finance. I come to a specialist. Ma'am, how do you see all this? Because at the end of it, we are still troubled. Paisa kahan se aayega? While it is so casually mentioned, there is no dirt of money. Go into the community level, see the kind of system that we have is just falling apart. No, I don't want to say it on this public platform. How do you see all this? What about the kind of resources? What kind of financing models? Leadership, governance is a huge question. You may limit yourself because possibly they'll start standing here and telling us, giving us hints. Before they do that, ma'am, could you briefly put it? Because health is an investment not to be contained, not to be cost contained. And we're looking at where can the finance come in? There is an issue of governance, there is an issue of management. Those skills, capabilities also have to be developed. But your thoughts on it, ma'am? Hello. One is a very vast subject. The other one, I will just touch upon a couple of things that has worked. So the first one, he already said, it's about the leadership. It's also important to know that at the ground level, when we talk about the resilience, there are a lot of all aspects and all types of NGOs work there. So size could be varying, it's highly this one. One of the things that we have seen is that at the NGO level, the skills, the understanding of financial aspects of it,
the money raising, the management of that continues to be a major challenge. So one of the things that all of us, as we really look at and work with various NGOs, there is an important aspect of, increasing their leadership, ability to manage finances and other aspects of it. So that is a very important thing. The other he talked about is in terms of governance. I think, as leaders really put, project funds, use this, we have come to understand that as anybody at the level, at different levels, we have to understand there is going to be checks and balances. All of us can't anyway, get away from the fact that we have to learn to look at balance sheets. We have to really look at the cost part of it, because there is going to be audits. All our projects, this funding is also be audited, third party, and so on. So even for the money that is given to NGOs, this continues to be a major challenge. And we have to really be geared towards it. Transparency, accounting systems, all that has to be there. In terms of, raising funds itself and how, at various levels we want, there has been newer ways to look at, especially in healthcare, where the finances, the cost of care is very high. One of the things that has come as, effectively, a lot of these NGOs are also doing is what is known as crowdsourcing. So the finance, there are many companies now regularly, raising funds for, very expensive treatments, life-saving things. So that's another part of how that funding is also can be accessed. So very briefly talking about, the governance aspects, as much as whether it could be your department, small teams, big, large, this one, I think, putting the governance system is a very important one. And, it's not because an external person will come and audit. The stronger your internal systems are, the stronger we are able to respond. And that is what is the whole crux of it. There are many, many models which have come in terms of, raising funds, for larger projects and various others. So those methods could be adopted, but then again, ensuring that there is transparency, there is proper accounting, fund management, due diligence are all aspects of governance and finance. So with this small answer to a very, very big opening up, so that is back to you, sir. Thank you, ma'am. I was aware that it's too complex an issue to be handled in 1 odd minutes, and I've got the hints from the organizers to wind up. Maybe आपको मैं बताना चाहता हूँ एक, सर ये जो शमशान घाट की आप बात कर रहे हैं कि इज्जत से उनकी क्रियाकर्म हो जाए, for the information of the audience, the armed forces have something called assured decent last rites. While a serving soldier will be taken care ceremonially, but even a retired soldier is assured of a last decent right by the armed forces. Such a proud thing that I know that it's a reality, truth. Someday I will die, but my armed forces will take care of my last rites. I would like to, we did briefly touch upon the CSR, the corporate social responsibility towards the responsible spending on the society, 2% of the last 3 years net profit. There are issues in that. There are a lot of rules in the Company Act. कहाँ खर्चा कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता है. He cannot donate to a government scheme. He can give it to NGO. He can do it through many other things. But I'm sure, Shunty ji, इस चीज़ में काफ़ी बार आपका ये स्कोप आया होगा कि CSR वाली जो फंड्स है, उसमें कैसे आप इसको लाके इसको वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट की थी, वो जो आपको वो रकम दे, तो ये जो प्रोसीजर है, रकम तो मिल जाएगा, आप तो काम कर लेंगे, लेकिन ये जो लेने की प्रोसीजर है, इसके बारे में थोड़ी सी हमें बताइए. मुझे लगता है सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था कि जो बड़ी कंपनीज हैं या लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जिनका 100-200 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, उनको कंपलसरी कर दिया कि आपने देश की सेवा के लिए, मानवता के लिए
CSR फंड में से पैसा लगाना ही लगाना है, परसेंटेज तय कर दिया उन्होंने। लेकिन उसमें कई लोग वो 2% पैसा लगाने की जो सरकार की शर्त थी, उसका जरिया देखो कितना शानदार निकाला लोगों ने। उन्होंने आगे ट्रस्ट भी अपने बना लिए। मैं अभी माननीय सीतारमन जी से मिलके आया था पीछे, अच्छी बातचीत हुई मेरी। जब मैंने बताया, उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने एक्शन भी लिया उसके ऊपर। मैंने कहा जी मैं आपको 1000 कंपनियों का ब्यौरा ऐसा दे सकता हूँ जिन्होंने 1 रुपये भी आज तक बाहर नहीं दिया। किसी ने अपना स्कूल बना लिया है, किसी ने अपनी NGO बना ली है, किसी ने अपना ट्रस्ट बना लिया है, किसी ने धार्मिक स्थल बना लिया है। और मज़ेदार बात कि जो ट्रस्टी हैं वही उस कंपनी में डायरेक्टर हैं। ये कैसे हो सकता है? तो आप पैसे देने के नाम पे जो देश के लिए लगना था, सेवा के लिए लगना था, जब कोई मांगने जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि हमारी इतनी बड़ी NGO है, इतना हम काम कर रहे हैं, सिर्फ 4 कंपनियां पूरे देश में से मेरे को ऑफर करी, सिर्फ 4 कंपनियों ने। मैं उनको थैंक्स भी करता हूँ, स्लीप वेल एंड बजाज एलियंस, महिंद्रा टेक महिंद्रा। इन्होंने मुझे खुद आके कहा कि हम एक एम्बुलेंस आपको देना चाहते हैं शंटी जी। लेकिन बाकी जिनको भी हमने ऑफर भी किया, उनका जवाब सुन लीजिए कई कंपनियों का, मैं नाम नहीं बताऊंगा, कि हम आपको अगर लाख रुपए देंगे 50,000 आपको वापस देना पड़ेगा। 1 करोड़ देंगे तो 50 लाख वापस देना पड़ेगा। क्यों जी? वो कहते जी हमने सरकार का घर पूरा कर दिया है, उस पैसे को कैसे खर्च करना है कागजों में तो दिखाना है। तो इसके लिए मैंने कहा आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर को कि इनके ऊपर आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, इनके साथ कोई ना कोई ऑफिसर लगाने पड़ेंगे, पर्टिकुलर इन इंडस्ट्रीज़ को जो बड़ी हैं और पैसा बिल्कुल नहीं दे रही हैं बाहर में सरकार, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, चाहे वो मैं कहता हूँ मिलिट्री को दें, चाहे प्रधानमंत्री कोष में दें, पैसा तो निकालें वो। मैंने 1000 कंपनी की लिस्ट दी उनको, तो उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया और उनको नोटिस भी सर्व हुए काफ़ी सारी कंपनियों को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोग भी जो हैं वो चुस्त हो गए हैं। जो बड़ी कंपनी वाले वो अपने लिए तो खर्च सकते हैं, लेकिन समाज के लिए पैसा देने को तैयार नहीं है। NGO चलाना मजाक नहीं है आज की तारीख में। NGO चलाने वाले को अपने घर तक कईयों को बिक जाते हैं। इसलिए CSR सही रूप में जो कामयाबी तरीके से खर्च होना चाहिए था, वो देश के लिए नहीं हो रहा है। A very bitter reality of behind the CSR. We have been told to wind up, but we are open to questions from the audience on a matter that has no boundaries and no contours. There are many here who are students and residents. Please, your comments, your questions. Maybe we can take a couple. Yes, ma'am. It was indeed a very touching, session. I'm sure many had teary eyes. Old. It was a very touching session. I'm sure hearing the stories, many of us had teary eyes during the session. So thank you so much, sir. It was an honor to be an audience here. Sir, we've been talking about resilience and how to, how to sustain this. I am listed for doctorate studies, and I think empowering the community itself is going to, take it. Empowering the community not only in terms of, curative medicine. I think there's a lot of potential in terms of promotive and preventive medicine, and that is where we had a previous session on communication, which we could not engage with the audience due to shortage of time. But communicating communicating with the community, empowering the community in the true sense, where we not only engage, the community does not only engage with the healthcare providers for curative services, but also for a lot of preventive and promotive services, because at the end of the day, the entire objective of having a healthcare system is the health of the community, is the well-being of the community. We have come quite a journey from in time of independence, where we had a lot of communicable diseases, and now we are talking about NCDs, cancers, and mental health. But then I think we need to move towards preventive and promotive empowerment. Thank you, ma'am. That was the point, actually. I did make a mention in the introductories that healthcare somehow in the community sense has
appears to be sickness care. Our healthcare has been designed more for individual care rather than population care. And that population care is to reduce the burden that comes on the hospital system, as she says, the preventive, promotive. They don't require doctors. We don't require doctors for that. Yes, a literate citizenry, engaged citizenry, leadership, empowered leadership, responsible leadership at the community level, who could channelize this community to take rightfully what is required to stay healthy. And that would confer us resilience. I see a mic in your hand, sir. I think you would like to make a comment or, yes, sir, please go ahead. क्वेश्चन है शंटी जी से। हिंदू, सिख और जैन तो क्रीमेट होते हैं, बट जो क्रिश्चियन है और जो मुस्लिम्स हैं वो बड़ी होते हैं। तो कोविड टाइम में उनको भी क्रीमेट किया गया, राइट। नाउ एक सेंसिटिव मैटर हो सकता है। मेरा ये प्रश्न है कि आपके हिसाब से लुक बैक करने के तरीके से क्या ये दोनों निर्णय सही थे कि बरी नहीं करना, सिर्फ क्रीमेट करना है? आपका पर्सनल व्यू क्या है? क्योंकि एक इशू है डिसेंट लास्ट राइट्स, डिसेंट बुरियल वर्सेस डिसेंट क्रीमेशन। उस पर थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर ज़रूर है, बट मुझे पता है आप बिल्कुल बात सच बोलने में डरते नहीं हैं, तो इसलिए जानना चाहता हूँ। देखिए, जब हमारा कहीं फ़ायदा हो रहा होता है, हम मुसीबत में होते हैं, भूल जाते हैं, हम मजहब भूल जाते हैं वहाँ पे। मैं ब्लड डोनेशन पे बहुत काम करता हूँ। मैं खुद 106 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और मैं ब्लड बैंक्स में से लोगों को चिट्ठी बना के ब्लड देता रहता हूँ। अब एक बहुत कट्टर व्यक्ति आए कि शंटी जी मेरी मिसिस के लिए ब्लड चाहिए, आज ही डिलीवरी, अभी चाहिए। मैंने कहा ब्लड तो है, पर व्यक्ति आपकी कम्युनिटी का नहीं है। मैं कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कह रहे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप जल्दी जल्दी दीजिए, मेरी बीवी की जान बच जाएगी। मैंने कहा यार, पानी पीते समय तो सोचते हो आप, खून के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है इसमें। राइट। इसी तरीके से मैं आपको बड़ा फैक्ट बात बताने जा रहा हूँ कि मेरे शमशान घाट सीमापुरी में 14 संस्कार मैंने क्रिश्चियन के किए हैं। फादर जोसेफ आए जीटीबी चर्च से कि शंटी जी मेरे पास 14 डेड बॉडी हम क्रिश्चियंस की पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड में जगह नहीं है। तो मैंने कहा जी आप जलाएंगे तो ये तो आपके रिचुअल्स नहीं है। कहने लगे नहीं, आप इनको एक बार ही जला दीजिए, उसके बाद हम यहाँ आपने जो करने हैं रिचुअल कर लेंगे, उसकी फिर एशेस ले जाके हम दफना देंगे, कम जगह में काम हो जाएगा। देखिए हालात ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया कि हमको झुकना पड़ा। परमात्मा ने आपकी औकात दिखा दी। वो वक्त फिल्म का एक नगमा था ना, उसका एक अंतरा था कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला। ब्यूटीफुल। तो इसलिए कोई धर्म आड़े नहीं आया जी। मैंने मुस्लिम के भी किए हैं जी, क्रिश्चियन के भी किए हैं जी। मेरा ड्राइवर जो मरा वो भी क्रिश्चियन मुस्लिम था जी, आरिफ, मेरे पास 30 साल से था, वो भी चला गया बेचारा सेवा करते करते। तो कोई धर्म आड़े नहीं आया, उससे में सिर्फ मानवता थी जो काम कर रही थी। थैंक यू। Very aptly put. Colonel Surekha, give me a minute to wind up. Sir. Esteemed audience, we went through very horrifying times, 2020, 2021, COVID, went through a lot of ups and downs. I don't think there is anyone in the audience who has not been affected by a misfortune to one of the relatives or a known person. During that, we had disasters. West Bengal, Maharashtra. During a time that we were taking care of the COVID pandemic, we did have disasters. But look at it. This country of 1.4 billion, with a GDP spending by the government of 1.26%, with a per capita health spending of $40, whereas the American system boasts of $8,000.
where dead bodies were removed after 2 months by the engineer corps of the US Army. They were lying there. Haven't we displayed resilience? We may not have built it in. Our greatness of this nation has been our response, agility under such adverse situations. And people like him selflessly conferring that resilience and to this society. My closing thoughts? Yes, it's not that we are there. There's so much we can discuss, the One Health and so many, the geriatric group and all that, those vulnerable sectors of our society where more resilience is required. But there is so much more to be done. One of those is the responsible and empowered leadership, engaged citizenry, agile healthcare system, and a lot of government initiatives are there taking us forward. We didn't get time to discuss all those. And more commitment, more jasba from our society for what he brings on the table. Ladies and gentlemen, it's been an honor to have chaired this session, and I'm personally, sir, honored to have been with you on this stage, and we thank you for your services. Include my co-panelist, Dr. Manjunath, and this crazy paratrooper who jumps for no reason from 30,000 feet, who's ready to suffer injuries and all that, selfless. He has no money. I thank the organizers for having allowed us to discuss this. I wish we had a little more time, but I think everything must come to an end. Thank you so much. It's been a great honor. Thank you so much, sir. Thank you. We are indeed grateful for a very, very interesting and heartwarming session, right? Some sessions have stimulated us intellectually, but this session, ye dil ko chhu gaya. Thank you very much. So, sir, I now request Major General Dr. Yadu Vir Singh, Vishisht Seva Medal, veteran of the Indian Army and Finance Director of the Academy of Hospital Administration, to come up to the stage to felicitate our moderator as well as the panelists. Lieutenant General Dr. S.D. Behera, Ati Vishisht Seva Medal, veteran of the Indian Army. Thank you, sir, for moderating this session so beautifully. Padma Shri, Dr. Jitender Singh Shunty, founder Shaheed Bhagat Singh Seva Dal. सर आपने हम सबका दिल छू लिया, बहुत बहुत शुक्रिया. Lieutenant Colonel Yadu Vir Singh, the man who jumps from a functional aircraft. Thank you so much for being on the panel. Dr. Usha Manjunath, Director IIHMR Bangalore. Thank you, ma'am, for being here.